बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्विक रिव्यू करेंगे कूलम लॉ का और कूलम लॉ इन ए मटेरियल मीडिया। इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और फिर इसी टॉपिक के साथ जितने भी MCQs पॉसिबल हो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे बाय सम शॉर्टकट्स। सो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। Coulomb law of electrostatic. This was presented by Coulomb in 1785 and is simply defined as the electric force if E exerted by one point charge on another varies inversely as the square of the distance separating the charges and is proportional to the product of charges. The force is repulsive if the charge have the same sign and attractive if the charge have opposite sign. And the magnitude of electric force exerted by a charge Q1 on another charge Q2 at a distance r away thus given by this one if equal to k Q1 Q2 by r square equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. This is the mathematical form of Coulomb law. According to Coulomb, अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज हो Q1 और ये हमारे पास चार्ज हो Q2, अब अगर इस चार्ज का जो डायमीटर है या इस चार्ज का जो डायमीटर है अगर इसकी डायमीटर कम हो और इन दोनों चार्जों के दरमियान जो डिस्टेंस हो आर ये लार्ज हो, मीन दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ ईच चार्जेस और दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द चार्जेस, देन द अरेंजमेंट ऑफ such two charges is known as point charges. And according to Coulomb, the attractive or repulsive force between these two charges and the distance between these two charges, that is r, can be interrelated by this form. Here k is known as Coulomb constant, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ही है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k r 1 over 4 pi epsilon naught and k is known as Coulomb constant. This epsilon naught is known as permittivity of free space and simply defined as the response of a medium to the electric field is known as permittivity. And this permittivity epsilon naught per free space equal to 8.85 10 power minus 12 Coulomb square divided by Newton meter square. So this is the value of permittivity or electric permittivity per free space. Now, vector form of Coulomb law. If this is a Q1 and this is a Q2 and the force between this Q1 Q2 can be written as this one. This is the vector form of Coulomb law, where F12 force on charge Q1 due to Q2 and R21 unit vector point from charge Q2 to Q1. Similarly, F21 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R1 to unit vector. So this is the mathematical vector form for Coulomb law, as well as this is the vector form of Coulomb law. Now, some important point about Coulomb law. It valid for point and stationary charges. It valid for those charges which having separation या distance larger than 10 power minus 15 मीटर. याद रखिए Coulomb लॉ को हम उस चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे जिसके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो 10 पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा हो. मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एटम का न्यूक्लियस ले लें तो वहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 10 पावर माइनस 50 मीटर से कम होता है. तो वहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वहाँ पर Coulomb लॉ वैलिड नहीं होता, तो वो प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. सो दिस इज द रेंज फॉर Coulomb फोर्स. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is greater than this one, then Coulomb law will be valid. And if the distance between two charges is less than 10 power minus 15 meter, then Coulomb law will be fail. And point 3, when two charges exert forces simultaneously on a third charge,
the total force acting on that charge is the vector sum of the force that the two charges would exert individually. This important property is also known as principle of superposition of forces. According to principle of superposition of forces, अगर ये हमारे पास कोई चार्ज हो Q1 और ये हमारे पास कोई भी चार्ज हो Q2, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मीन्स अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हो तो अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट साइन के हो तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम साइन के हो तो रिपल्सिव होगा। अगर इस Q1 Q2 के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है हमारे पास है F1, सिमिलरली का हम यहाँ पर एक और चार्ज रखते हैं जिसका नाम है Q3, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो हमारे पास होगा F13। सिमिलरली अगर हम इस Q1 और यहाँ पर एक और चार्ज रख दे Qn या यहाँ पर रख दे, तो इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज Q1 ड्यू टू दिस Q2, Q3 up to Qn will be the vector sum of all these forces. मीन्स इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है F12, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है F13 और इसके दरमियान जो फोर्स है F1n, तो इसको हम विक्टोरियली बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे, तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो इस Q1 चार्ज पर नेट एक्टिंग फोर्स होगा। सो द नेट एक्टिंग फोर्स चार्ज on Q1 due to 2, 3 and so on, that is F12, F13 up to F1n. Now we know that F12 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12, F13 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 divided by R13, and F1n equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R1n. अगर इसकी हम वैल्यू को पुट करें ऐड करें, so we obtain this one. So the net force on this Q1 due to all these n charges equal to this one, and the summation of all these forces is known as principle of superposition of forces. Point 4, the electric force is an action-reaction pair. The two charges exert equal and opposite force on each other. The electric force is conservative nature, means work done by the electric force in closed path is equal to 0, or work done by the electric force independent of path. If some dielectric insulator is present in the space between the two charges, then the net force acting on each charge is changed because charges are induced in molecule of the medium, so Coulomb law become this one. याद रखें हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हो, उसके दरमियान हम कोई एक इंसुलेटर रख दे, तो कूलम लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो ये होगा F डैश इक्वल टू K डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि कूलम कांस्टेंट जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, तो K से K डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाउ वी नो दैट this shows the permittivity of insulator which is present between two charges, and this permittivity is equal to dielectric constant epsilon r into permittivity of free space. Means the ratio between permittivity of medium to permittivity of free space is known as dielectric constant, or relative permittivity, that is epsilon r. So by this expression, epsilon convert to epsilon naught into epsilon r. So this equation becomes this one. So this is the Coulomb law for mediums, where epsilon r known as dielectric constant or relative permittivity of the medium, and epsilon naught is permittivity of free space. Point 7, Coulomb law cannot apply if the shape of the charge arbitrary, because in irregular shape it becomes difficult to determine the distance between the particle. Again remember, we know that Coulomb law is equal to K1 Q2 by R square. If we have two charges same magnitude, then Coulomb law is equal to KQ square by R square. According to this expression, if R increase
between two charges n time, then the force will be reduced 1 by n square time. Similarly, the force is directly proportional to q square. So if the charge increase n time, then the Coulomb force between two charges increase up to n square time. And this is a important table of relative permittivity for various dielectric material, as all these material are dielectric in nature, and the value of its epsilon r relative permittivity is this one. Now take this one. This show that the water relative permittivity or dielectric constant is equal to almost 78, that's 78.5. So this show if we have two charges, this is Q1 and Q2, and these two exert a Coulombic force on each other. So if we put here water molecule, then the Coulomb force between this Q1 Q2 become this one. F dash H2 equal to 1 by 4 pi epsilon r epsilon naught Q1 Q2 by r square. But the permittivity, the dielectric constant or relative permittivity for water is 78 according to this table. So the Coulomb force change, that is F dash equal to 1 by 78, this one. This is nothing but the Coulomb force between two charges if there is no medium. So F dash equal to 1 by 78 into F. So it means if we put water molecule between two charges, then the Coulomb force will be reduced up to 1 over 78 times. Means when we put dielectric constant or dielectric material between two charges, then the Coulomb force between two charges will be reduced by a factor of what? 1 by epsilon r. Now MCQ नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं. A is U is unit of charge which is also called electrostatic unit of charge equal to what? याद रखिए हमारे पास ESU जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास बराबर होता है 3.3 10 पावर माइनस 10 कूलम के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, that is 1 ESU equal to 3.3 10 power minus 10 coulomb. MCQ number 2. When a glass rod is rubbed with a silk, it gain electron from the silk, gave electron to the silk, gain proton from the silk, gave proton to the silk. The correct option is option B. Why? When we rub glass rod with silk, the rod has lost electron, so the excess electron are transferred from glass to silk. So glass rod become positive and silk become negative with respect to charges. MCQ number 3. Two similar small sphere having plus q and minus q charge are keep at a certain distance. If force act between the two, if in the middle of two sphere another similar small sphere having plus charge q is kept, then it will experience a force in magnitude and direction is 0 having no direction, 8f towards plus q charge, 8f towards negative q charge, 4f toward plus q charge. सो याद रखिए क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर. सो द कूलम फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इफ इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. नाउ इफ वी पुट हियर plus q charge between these two, so this geometry convert to this form. So this is plus q charge. Now the distance between these two is what? r by 2, and this become r by 2. अगर इसको हम देखें हमारे पास प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, and we know that the electric field line move from positive toward negative. So this negative charge attract this plus q charge toward right or toward c. Similarly this plus charge q रिपेल दिस प्लस चार्ज क्यों टूवर्ड सी. अगर इसको हम देखें तो इस पर चार्ज पर जो ये फोर्स एक्ट करता है वो हमारे पास है ये वाला,
और इस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू माइनस क्यू, ये है हमारे पास ये वाला। तो ये दोनों फोर्स हमारे पास पैरेलल है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे बाय दिस वन, सो वी obtain 8m. So it means when a positive charge placed between two opposite charges, then the positive charge will be moved toward the negative charge and the force act on this positive charge, that will be 8m. So the correct option is option C. MCQ number 4. Dimensional formula of Coulomb constant is what? We know that F equal to K Q1 Q2 by R square, this is known as Coulomb constant. तो इसका हम यूनिट मालूम करेंगे। तो अगर इसका हम यूनिट मालूम करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ज है कूलम स्क्वायर है, लाइक वी नो दैट I इक्वल टू Q by T और कूलम इक्वल टू एम्पेयर इनटू टाइम। सो पुटिंग द वैल्यूज, so replace this Coulomb square by ampere square T square. So this expression become this one. Now we know that kilogram is the unit of mass, so replace kilogram by m by L cube, and this is dimension of current A square, and S square T square become T cube 4. So the dimensional formula of Coulomb constant is this one. So the correct option is option B. MCQ number 5. A charge Q1 exerts some force on a second charge Q2. If a third charge Q3 is brought near Q2, the force exerted by Q1 on Q2 will be what? So according to principle of superposition of forces, there will be no change of force between this Q1 and Q2 charge if Q3 is present or not. So the correct option is option C. MCQ number 6. The ratio between permittivity of medium and permittivity of free space is called relative permittivity. We know that epsilon r equal to permittivity of medium to permittivity of free space. This ratio is known as epsilon r or relative permittivity. MCQ number 7. Charge on alpha particle is what? So याद रखिए, we know that alpha having 2 proton, so 2, and we know that the charge on a proton is 1.16 power minus 19 coulomb. So by multiply this we obtain this one. So the charge on alpha particle is this one. MCQ number 8. A conductor has 14.14 power minus 19 coulomb positive charge. The conductor has charge will be what? हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस पर ये चार्ज प्रेजेंट है। अब हमने मालूम करना है कि ये चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज मीन्स deficiency of electron, so we know that total charge on an object equal to n, which is a number, into charge of the electron, means total charge on an object equal to n multiple to charge of a single electron. If we simplify this, we obtain n equal to q by e. Putting the value of q and charge of electron is this one. By simplify we obtain 9. So it means 9 electron and excess when this amount charge present on a conductor. MCQ number 9. Two small conducting sphere of equal radius having charge 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb and placed at a distance r from each other. They experience force F1. If they are brought in contact and separate to the same distance, they experience force F2. The ratio of F1 to F2 will be what? हमारे पास ये दो सिंपल चार्ज है, एक है 10 माइक्रोकूलम प्लस एक है minus 20 microcoulomb, this one. So the force of attraction between these two is this one. F1 equal to K by R square Q1 Q2. Let K is a constant and assume this R is also constant. So this expression become F1 equal to C Q1 Q2, where Q1 is plus 10 microcoulomb and Q2 is minus 20 microcoulomb. Now अगर इस दोनों को हम कंबाइन करें, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में करें,
तो नेट चार्ज ऑन ईच पार्टिकल क्या होगा, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 दैट इज -5 माइक्रो कूलम। मीन्स अगर दोनों को हम कंबाइन करें और आफ्टर इसको हम इसी पोजीशन पर रख दें तो एक हर इंडिविजुअल चार्ज पर कितना चार्ज होगा, -5 माइक्रो कूलम। नाउ द कूलम फोर्स बिटवीन दिस -5 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम इज दिस वन if 2 equal to constant Q1 dash Q2 dash। बट अगर इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करें, 1 को 2 से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1 dash Q2 dash। नाउ if 1 by if 2 Q1 is plus 10 microcoulomb, Q2 is minus 20 microcoulomb, Q1 dash is minus 5 microcoulomb, Q2 dash is minus 5 microcoulomb। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन -8:1। सो इट मीन्स अगर हमारे पास दो चार्ज हो, एक हो +10 माइक्रोकूलम, दूसरा हो -20 माइक्रोकूलम, अगर दोनों को हम कंबाइन करें और पीसी को इसी ही डिस्टेंस पर सेपरेट करें एक दूसरे से, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, उनके दरमियान जो रेशो होगा वो क्या होगा, -8:1। MCQ नंबर 10। When a body is earth connected, electron from the earth flow into the body. This means the body is what? Uncharged, charged positively, charged negatively, and insulated. Option B is correct. Why? When positively charged pair connected to earth, electron flow from the earth to the body and body become neutral. So the correct option is option B. That is charged positively, mean the body is charged positively because the electron move from the earth toward the body to convert the body to neutral form. There are two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be what? तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू कूलम, ये 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, ये 5 कूलम चार्ज है। अगर ये दोनों को हम किसी r डिस्टेंस पर रख दे तो ये एक दूसरे पर इक्वल फोर्स को एक्ट करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। सो मीन द फोर्स एक्ट बाय 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द फोर्स एक्ट बाय 5 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी सेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs number 12। The ratio of Coulomb constant and universal gravitational constant will be what? हमारे पास एक Coulomb constant है K और एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G। इन दोनों के दरमियान रेशो क्या होगा? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ K and G and simplify we obtain this one. So the correct option is option C. MCQ number 13। The gravitational force and electric force represent gravitational electrostatic force respectively. Means this if G show gravitational force, if E show electric force between electrons situated at a distance 10 centimeter. The ratio of gravitational force and electric force will be what? तो हमने सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशो मालूम करना है किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो 10 सेंटीमीटर के पास पर हो एक दूसरे से। So gravitational force is this one, electric force is this one. If we simplify this, we obtain 2.39 10 power minus 43. So this is the ratio between gravitational force and electric force for two charges which are placed 10 centimeter away from each other. MCQ number 14. When 10 power 14 electrons are removed from a neutral metal, the charge on the sphere will be what? मिसाल के तौर पर इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से रिमूव हुआ तो हमने मालूम करना है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज रहेगा। सो वी नो दैट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू n into E, number multiple to charge of the electron. So putting the value of n, that is 10 power 14, and charge of electron is this one. By simplify this, we obtain 16 microcoulomb. So it means if this amount of electron removed from an object, then the object gain this amount of charge. So the correct option is option A. MCQ number 15. Two charged pairs separated at a distance d exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid such that the electric constant of liquid is 2, then what is the force
If all conditions are same, mean the distance between two charges is same. That is F by 2, F to F or 4F. We know that dielectric constant is nothing the ratio between permittivity of any medium to permittivity of free space, or the Coulomb force between two charges when charges are placed in vacuum, and the force between two charges when some medium between the charges present. So by solving this, we obtain F dash equal to F by epsilon r. The medium between two charges is epsilon, which dielectric constant is 2. So F dash equal to F by 2. So the force will be half. MCQ number 16. A charge Q is lie at midpoint of the line joining the two similar charges Q. The system will be in equilibrium if the value of Q is capital Q by 2 minus Q by 2, capital Q by 4 minus capital Q by 4. Remember, net force on charge Q should be 0 if capital Q and Q should be unlike in nature. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास ये एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है प्लस कैपिटल Q। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? 2r डिस्टेंस के दूरी पर है। अब क्वेश्चन में कहते हैं अगर हम इसके मिड में एक चार्ज को रख दें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r और ये भी हमारे पास रहेगा r। अगर इस चार्ज को हम रख दें सच दैट इसका जो सिंबल हो, इसका जो साइन हो, वो दोनों के अपोजिट हो, मीन अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, तब इन दोनों चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, मीन इसको स्टेबल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने इस चार्ज क्यों जिसका साइन अपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू दिस टू, इसकी क्या वैल्यू रख दे कि सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो याद है कि हमारे पास ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये क्यू और ये क्यू एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन ये जो है इसका साइन अपोजिट है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब ये ज्योमेट्री, ये तीनों चार्ज तब स्टेबल होंगे जब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो बराबर हो इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन की। So according to this condition, KQ by r square equal to KQ divided by 2r square, where r is the distance between these two and 2r is the distance between these two. So by simplifying this, we obtain Q equal to minus Q by 4. So it is clear if we have two charges having same sign and if we put another charge which sign is opposite to these two in the middle between these two, then this geometry will be stable only if the amount of this charge is equal to 1 by 4 times the amount of this charge। मीन अगर इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 100 कूलम हो और ये भी 100 कूलम हो, दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन अगर हम मिड में माइनस 100 डिवाइड बाई 4 माइनस 25 कूलम को रखे तो ये दोनों चार्ज जो है स्टेबिलिटी गेन करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 17, 2 point charges plus 2 coulomb and 6 coulomb repel each other with a force 12 Newton. If a charge of minus 4 coulomb is given to each of these, then the force now will be what? 4 Newton repulsive, attractive, 12 Newton attractive, 8 Newton repulsive. Initially we have charged this one and this one. So the Coulomb force between these two is what? F equal to K by R square 2 into 6, that is the force between these two is what? 12 Newton, so 12 equal to K by R square, some constant, into 12, so constant equal to 1. Now अगर इसके साथ हम -4 कूलम को ऐड करें और इसके साथ -4 कूलम को ऐड करें तो ये बन जाएगा -2 कूलम और ये बन जाएगा +2 कूलम। Now the force of attraction between this -2 coulomb and +2 coulomb is this one. F dash equal to constant -2 into 2, but this constant equal to what? 1, so F dash equal to -4 Newton. So the force will be attractive in nature. So the correct option is option B. MCQ number 18. When 10 power 19 electrons are removed from a neutral metal, the electric charge on the metal will be what? So we know that charge on a surface is equal to number of electrons. So Q equal to the number of electrons removed from the metal surface, that is 10 power
19, and charge on single electron is this one. So by simplify this, we obtain 1.6 Coulomb. So it means if this amount of electron removed from metal surface, then the surface will be gain 1.6 Coulomb charge. So the correct option is option B. MCQ number 19. Let a charge of 16 Coulomb divided into two equal parts. The force of repulsion will be maximum if each part have charge what? याद रखिए हमारे पास एक 16 कूलम चार्ज हो, इसको हम डिवाइड करें 2 कूलम चार्ज में और 14 कूलम चार्ज में, तो वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस दैट इज Q1 Q2. So the attractive force or repulsive force will be 28 Newton. For this pair, attractive or repulsive force will be 55 Newton. For this pair, attractive or repulsive force will be 63 Newton according to this pair. And for this pair of charges, the Coulomb force will be 64 Newton. So it means if we have a charge and we divided this charge into equal parts and place these two charges at certain distance, then the force of attraction or repulsion will be maximum. So the correct option is option B. MCQ number 20. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको और ट्राई करें. MCQ number 21. A certain charge Q is divided into two parts Q and Q minus Q. How the charge Q and Q must be related so that these two placed a certain distance experience maximum force. तो याद रखिए इसको हमने अभी डिस्कस किया. अगर हमारे पास कोई भी चार्ज हो Q, अगर इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें Q/2 और Q/2 में डिवाइड करें तो ये एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स को अप्लाई करेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज Q/2. MCQ number 22. If a charge on the body is 1 nanocoulomb, then how many electrons are present on the body? So we know that Q is equal to Ne. अगर इसको सॉल्व करें n के लिए, so we obtain this one. MCQ number 23. Each of 2 point charges are double and their distance is half. The force of attraction become n times where n is what? So we know that if equal to k q1 q2 by r square, if equal to k q1 dash q2 by r dash square. So if we increase this q to 2 times and this q 2 times, so this become this one, and this r reduced to half, this become this one. By solving this, we obtain 16F. So it means if we have two charges, this is one and this one, and if we increase the magnitude of this 2 times and this 2 times, and this charge placed here mean the distance between these two reduced to half, then the attractive or repulsive force will be increased 16 times, that is 16M. MCQ number 24. 3 identical charges are placed at the corner of equilateral triangle. If the force between any two charges is F, then the net force on each will be what? ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q. इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास है F, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास है F. अब क्वेश्चन में कहते हैं कि इस चार्ज पर आपने नेट फोर्स को मालूम करना है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस पर जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होगा. So this is a equilateral triangle. So the net force in this for this geometry for equilateral triangle, that is F net force equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 into cos theta by vector algebra, and the angle between any two sides is 60. So by simplify this, we obtain this one. So the net force on this charge Q due to this charge and this charge will be what? Under the root 3 multiplied by F, where F is the force between this pair of charges or this pair of charges. MCQ number 25. When a piece of polythene is rubbed with a wool, a charge this one is developed on polythene. What is the amount? So by solving this, we obtain this one. Sorry, इसमें मास को मालूम करना है. As number of electron transfer, that is N equal to Q by E, and mass transfer to polythene will be what? Number of electron multiplied by mass of the electron. So mass of electron is this one and number of electron is QE. Putting the value, we obtain this one. So it means if this Coulomb charge transfer from one body to other, then it means that this
amount of mass transfer. So the correct option is option D. MCQs number 26. A soap bubble is give negative charge, then its radius will be what? याद है कि हमारे पास एक सोप बबल है, इनके दरमियान जो है मिसाल के तौर पर इसका हमारे पास जो डायमीटर है वो ये है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को स्प्रे करें तो ये चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो भी रिपेल करेगा, अगर इस पॉजिटिव को हम नेगेटिव से रिप्लेस करें तो भी रिपेल करेगा। तो इसका जो साइज़ है उसमें इंक्रीज आएगा, क्योंकि वी नो दैट द सरफेस चार्ज रिपेल ईच अदर। So it means the size of the bubble or radius of the bubble will be increased if same charge spray on the surface of a soap bubble. MCQ number 27. A point charge Q1 equal to this one, Q2 equal to this one, and the distance between is this one. Find the electrostatic force. Very simple. Using Coulomb law, we obtain this one. MCQ number 28. Two charges are a distance apart, d distance apart. If a copper plate of thickness d by 2 is kept between them, then the effective force will be what? We know that the Coulomb force between two charges such that there is a medium exists between two charges is this one. If dash equal to 1 by 4 pi epsilon r epsilon naught q1 q2 by r square. अगर दो चार्ज के दरमियान हम कॉपर को रखें तो याद रखिए कॉपर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, चूँकि कॉपर हमारे पास मेटल है और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, तो अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी को पुट करें सो एफ डैश इक्वल टू 0. सो इट मीन्स इफ वी इंसर्ट ए मेटल और कंडक्टर बिटवीन टू चार्जेस then the Coulomb force will be reduced to 0. MCQ number 29. A ball with charge minus 50 electron is placed in the center of a hollow spherical shell, has a net charge of minus 50 electron. What is the charge on the outer shell of the surface? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक शेल है, यहाँ पर हमने 50 इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएंगे इनर शेल में। मीन्स यहाँ पर हमने 50 इलेक्ट्रॉन को रखा और यहाँ भी हमने 50 इलेक्ट्रॉन को रखा। सो टोटल चार्ज इनसाइड दिस ब्लू कर्व इज minus 50 इलेक्ट्रॉन. Now as a result there will be plus 100 electron plus 100 proton charge occur on the surface to gain the stability. क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये एक सरफेस है और यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, कितना चार्ज मौजूद था, सॉरी -50 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर बात है अगर ये हमारे पास कोई भी होलो शेल है तो ये तो न्यूट्रल है। अगर यहाँ पर हमारे पास -50 ई चार्ज है तो सरफेस पर चार्ज कितनी होगी? +50 ई होगा, क्योंकि हमारे पास जो शेल है वो हमारे पास न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमने यहाँ पर -50 इलेक्ट्रॉन और रखे, तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 50 प्लस प्रोटॉन आकर होंगे ताकि ये शेल न्यूट्रल हो जाए। सो द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल विल बी 50 प्लस 50, दैट इज 100 E, that is 100 charge of the proton. Question 30, which is very important. 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and a force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, the net force will be what? Question में कहते हैं हमारे पास दो चार्ज है, ये इसके दरमियान डिस्टेंस है R। मिसाल के तौर पर चार्ज हमारे पास है प्लस Q, मीन 100 प्रोटॉन है, ये हमारे पास जो है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारे पास होगा M। अब यहाँ से हमने 25 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया यहाँ तक, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी परसेंटेज हमारे पास होगी, अगर इसको हम 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें 75 या 0.7 परसेंटेज होगी हमारे पास 75% या 0.75 E। और इसकी जो है हमारे पास अमाउंट क्या होगी, ये हमारे पास बाकी रह जाएगी 75% अब E। 75% इलेक्ट्रॉन मीन्स 0.75 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास होगी कितनी
0.75 या 75%, 75% मीन 0.75, हमारे पास 100% है। अगर इसके साथ हम 25 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो 75% बन जाएगी। 75% मीन 0.75 ई। तो इसका जो चार्ज है हमारे पास है प्लस क्यू, इसका हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू। करेक्ट। इन दोनों के दरमियान फोर्स कितना है एफ। अब इस चार्ज की अमाउंट कितनी बाकी रह गई आफ्टर एडिंग 25 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0.75 ई, और ये भी हमारे पास हो जाएगी 0.75 ई। Now the force of attraction between these two will be what? So if you multiply these two, we obtain 0.5625 or simple 9/16. So it means if 25% electron transfer from this body to this body, then the force of attraction will be reduced to 9/16 F. So the correct option is option A. This one इसको और ट्राई करें। MCQ number 32. The number of electron in 2 coulomb of charge very simple. 1 coulomb equal to this one, 2 coulomb will be equal to what? So इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, obtain this one. हमें मालूम है कि हमारे पास 1 coulomb में कितना चार्ज होता है 6.2 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो दो को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको obtain this one. MCQ number 33. What is the charge on 90 kilogram of electron? We know that charge to mass ratio is equal to 1.76 10 power 11 coulomb पर किलोग्राम। मीन्स अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मटेरियल हो, करेक्ट, और इस पर इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसका जो है चार्ज कितना होगा 1.76 10 पावर 11 कूलम। अगर हमारे पास मास 90 किलोग्राम हो तो उसमें हमारे पास कितना चार्ज एकोमोडेट होगा, तो सिंपली इसके साथ हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी obtain this one. So it means the 90 kilogram of a substance consist on this amount of charge. MCQ number 34. If a charge and distance between two charges are reduced to half, then the force between them will be what? So this is the force of attraction or repulsion between 2 point charges when placed in a vacuum. But if a medium is exerted or the distance between the two charges change, this amount of charges change and the distance between two charges change, that is F dash equal to K Q1 dash Q2 dash by R dash square. This become Q by 2, this Q by 2, R by 2. By simplify this we obtain F. So it means if we have two charges Q1 Q2 and they are R distance away from each other, then the force of attraction or repulsion will be F. But if this amount of charge is reduced to half, this reduced to half, and the distance also reduced to half, then still the Coulomb force between two charges will be F. Means force will be doesn't change. MCQ number 35. The dielectric constant epsilon R of insulator can be: insulator dielectric constant never negative, never zero, never less than 1. So the correct option is 5. So an insulator having dielectric constant may be 5. This is not possible, this not possible, this also not possible. MCQ number 36. The dielectric constant K of insulator cannot be 2, 10, 5 infinity. याद रखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी भी इंसुलेटर के लिए वो 1 से ज़्यादा होगा, करेक्ट, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए ये भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पॉसिबल है फॉर इंसुलेटर, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इन्फिनिटी होगा वो ओनली फॉर मेटल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ number 37. How many electron will have a charge of 1 coulomb? It's very simple. This one. Two charge of 1 coulomb and 5 coulomb placed at some distance in air, the ratio of the forces will be same. This one means the force acted by 1 on 5 or 5 on 1 will be same. MCQ number 39. If F is the force between 2 point charges submerged of a medium of dielectric constant K, then on withdraw the medium, the force between the charge become will be what? So याद रखिए for a medium the force of attraction or repulsion equal to force of attraction and repulsion vacuum divided by dielectric constant. But according to the statement, the force is F, and if we again हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है, एक ये है और एक ये है,
और इसके दरमियान हमने कोई भी मीडियम रखा है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और ये एफ बराबर होता है फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस पर वैक्यूम डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ अगर इन दोनों चार्ज से हम ये मीडियम को रिमूव करें तो इनके दरमियान जो फोर्स बाकी रहेगा वो क्या होगा, सो दैट विल बी एफ पी क्यू इक्वल टू के एफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 40, the value of electric permittivity of free space is what? This one. इसको खुद ट्राई करें, there will be no issue. Similarly, the Coulomb force between two charges is 2 Newton. The Coulomb force between this charge and insulating material will be what? We know that the force of attraction or repulsion for insulating material, that is F medium equal to F medium, the force of attraction or repulsion between two charges such that a medium present, that is F medium. So the force of attraction or repulsion between two charges when there is no medium divided by dielectric constant of the medium. So the force is what? 2 Newton. The K is what? 3.8. By simplifying we obtain this one. So it means if a dielectric constant, this one, placed between two charges, then the Coulomb force becomes 0.53 Newton. Which of the following graph represent the relationship between the force between two point charges and the distance between them? We know that F is inversely proportional to R square. So the correct option is this one. Charge is a transferable associated mass conserved. कहते हैं कि चार्ज हमारे पास जो है ट्रांसफरेबल है, इसका मास होगा, कंजर्व होगा, ऑल ऑफ दिस। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे तक आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसका मास भी होता है, क्योंकि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी में जाए तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को मास होता है, तो इसका मतलब है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास एंटर हो। सिमिलरली चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, सो ऑल ऑफ दिस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली discussed by what? Millikan. Two spheres A and B of exactly same mass are give equal positive and negative charge respectively. Their masses after charging will be what? We know that mass of the proton greater than mass of the electron. So a positive charge object having larger mass than a negative charge object. So correct option is this one. With a rise in temperature, dielectric constant K will be what? That will be decreased. 1 Coulomb is equal to what? 3 into 10 power 9 ESU. AB Coulomb is the unit of charge which is equal to 10 Coulomb. Thank you, student.